With the sad demise of Dev Anand, industry is definitely in a state of shock. देव साहब की डेथ ने इंडस्ट्री के कई हस्तियों को कर दिया है गमगीन। जहां आमिर खान ने किया एक्सप्रेस अपना दुख, वहीं इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लिखी देव साहब के लिए कुछ यादगार बातें। अमिताभ बच्चन राइट्स, "An era has come to an end. Dev Anand leaves a void never perhaps to be filled again. His never give up belief, his joy of life." Shah Rukh Khan writes, "Dev Sahab's sad demise makes me feel that the film industry is incomplete and has lost its magical energy. May Allah bless his soul." Vivek Oberoi writes, "Bollywood's evergreen superstar Dev Anand passed away in London. The legendary actor was 88. Rest in peace, Dev Sahab. You will live forever in our hearts." While Akshay Kumar writes, "For me, life is equal to Dev Anand. My condolences to his family members. Rest in peace, Dev Anand Sahab." Dia Mirza writes, "Rest in peace, Dev Sahab. Your chivalry, charm, optimism and your great body of work will never be forgotten." Shabana Azmi writes, "Dev Sahab robustly lived life on his own terms. He will be missed by millions, but will live on through his movies. I salute his spirit." Mother Bhandarkar writes, "Shock to the core. A painful loss, a personal grief. Can't believe Dev Sahab is no more." सिर्फ इतना ही नहीं, Zoom ने बात की डायरेक्टर सुधीर मिश्रा से और जाना उनका एक्सपीरियंस विद देव साहब, and he also shared some memories which he spent with him. भाई मैं तो फिल्मों की मेमोरी है, थोड़ा एक जाती सा है। जब हम आनंद स्टूडियो जाया करते तो अक्सर मिलते थे। उनका जो जिंदा दिलपना था, जो एक आजाद ख्याल था, ट्रूली मॉडर्न आदमी थे, बहुत जेनरस थे। मुझे बार बार हाल में जब मैं उनसे मिलता था तो मुझे कास्ट करना चाह रहे थे अपनी प्रीवियस फिल्म में। बोले, बेटा तुम मेरी फिल्म में एक्टिंग करो। मैंने कहा, मैं एक्टर नहीं हूँ साहब, आपकी फिल्म खराब करूँगा। बट वो जिस तरह से वो एक एंथुजियास्टिकली आपसे मिलते थे, जिस तरह से यंग लोगों से मिलते थे, जो उनकी फिल्में थी मॉडर्न, अपने जमाने में एक स्टारडम उन्होंने कमाल का इस्तेमाल किया था, अपना मुमकिन किया था। उन्होंने बहुत लोगों को पहले चांसेस दिए थे। बहुत बहुत रिमार्केबल आदमी थे। साथ ही हमने ट्रेस किया देव साहब के स्पेशल फ्रेंड सैम को भी टू नो हिज रिएक्शन ऑन देव साहब सैड डिमाइस, और उन्होंने हमें बताया कितने स्पेशल थे देव साहब इन हिज लाइफ। What can I say? He was like my father. He was my best friend. I still remember the incident when he told me he had to sell his stamp album for 26 rupees because he didn't have food in 1943. He told me the incident where he could have died in 1943 and we would have never seen a Dev Anand. There was an explosion that happened in the dockyards. He was in the same office. The office shook, but he did not. He survived. Last time I met him was in the office before he left for London, and the last I spoke to him was on the 17th of December when he was boarding a flight to London, saying that I'm now leaving and I'm just, I'll be back after a month. And last night at about 2:30 in the morning, I was speaking to Sunil, and he just called me, just to say hello to me last night. We are not sure whether we would bring the body here or what we do with. At the moment, it's too early to give that comment. इंडस्ट्री का इतना बड़ा लॉस तो शायद ही कभी भर पाएगा। देव साहब के करिश्मा से इस पूरी इंडस्ट्री की चमक थी। We sure that Bollywood will always remember this veteran.